पुस्तक का संचालन दिव्यांशी जी को। What a wonderful audience and what energy of the entire. I think a huge round of applause for Gorakhpur because जो energy है गोरखपुर की वो यहाँ पे reflect हो रही है इस session में. So I think अगर गोरखपुर only एक बार जोरदार ताली बजा ले तो I think it will create. There is hardly anybody who doesn't recall about their childhood. Everybody revisits their childhood. How carefree were the days. There are possibly no shackles. But how many of us can actually recall it or pen it down, frame by frame? Today, we are joined by a very special guest. His guest is an actress, but that's not only her identity. She is a marvelous poetess, author, and a painter. Today, we are here to celebrate her marvelous book, which is named as A Country Called Childhood. Welcome, madam, to this very wonderful session. Thank you, Divyanshi. Thank you, all of you, for being here this evening. I was looking forward to my visit to Gorakhpur. I'm coming here after, I don't know, a lifetime. I think I was here in 1983. When I first joined films, I came here. At that time, I was here for 3-4 days. And now for the first time, I mean, it looks like एक जीवन बीच में बीत गया ऐसा लगता है. But I feel very nice coming back here. And thank you all for being here for me today. Thank you. Madam, we are here to celebrate this marvelous book. What a lovely title it goes as. A Country Called Childhood. In today's scenario, see that there is no country for women and like this. Why do you think childhood is a country? I use it like a metaphor because childhood is a vast landscape. It gives you, it brings in so much to you. It makes you who you are eventually, who you're going to end up being. It's all kind of rooted in childhood. You know, it's a vast landscape of experience, of things that impact you, things that even if you don't want to remember, you don't make an effort, but they are there. They are part of you. It grooms you, it nurtures you, and I look at it as a country where you live for those years, and when you move away, there's no going back except in memory. So this was a phrase which came while I was writing. लिखते लिखते phrase बन गया कि these are the sights, sounds, smells from the country where I once lived in, a country called childhood. And my publishers thought this is going to be the title of the book. Madam, this is an extremely personal memoir. ये पीछे एक सेकंड बहुत ज़्यादा शुर है, बहुत ज़्यादा. थोड़ा कम अगर हो सके. हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं. आप अपनी बात खत्म कर लीजिए. If you can please maintain decorum of the hall. We need a little bit silence. Request the audience at the back if we can maintain a little bit decorum. Yeah, you sing. When we read about this, when we read this book, A Country Called, it's an extremely personal memoir, but in many ways, it's a... Can we please check the mic? Hello? Hello. Madam, when we read this book, A Country Called Childhood, it is an extremely special memoir, but it's an intimate story of yourself, but also of the country. And it gives an opportunity to revisit the innocence of the childhood, the innocence of the country, and choices we made. And when we mention about the choices, your father made a choice. And the choice was to not continue the title, and he opted Naval as his title. Can you please tell about the story कि क्यों नवल आपके पिताजी ने अपनाया था title? Yeah, my father was he was a huge art enthusiast. He was a lover of art. I mean, the way I have known Pitaji, I used to call him Piti because as a child, I could never say the full word Pitaji. So वो बस end तक वो Piti ही रहा. उनकी जो
जिस तरह की वो शख्सियत जो थे वो, जैसी उनकी शख्सियत थी, he didn't want, he felt he wanted to do something different. He wanted to be different. He wanted to be different in his attitude towards things, in his take on life, in what he wanted to do with his life. He didn't want to, let's say, toe the line, something that I learned greatly from him. He didn't want to toe the line. So सबसे पहली चीज़ जब वो कॉलेज छोड़ के जब वो जब स्टडीज़ ख़त्म करके जब वो आए, उन्होंने अपना नाम बदला. उन्होंने कहा कि कहने लगे कि अमृतसर में इतने सारे लोग घूमते फिरते हैं, आई डोंट वांट टू बी अनदर शर्मा जी ऑन द स्ट्रीट. उन्होंने नाम बदल के नवल कर लिया, विच एक्चुअली मीन्स न्यू. तो वो उस ज़माने की कहानी है, हम लोग सुनते रहते थे इस स्टोरी को, बट एट दैट टाइम वी डिडंट टेक इट सीरियसली कि ठीक है नवल हो गया नाम. तो बट व्हेन आई थिंक ऑफ माय पेरेंट्स, दे डिड ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली, एंड आई थिंक दैट्स. I think if we maintain silence at the back, तब सेशन में थोड़ा ज़्यादा और मज़ा आएगा. मैडम, आपने अब बुक में एक बार, I think we can change the mind. No, she's losing her voice in between. Try this. Hello. Madam, your Hello. family has been extremely modern, forward-looking. और आज के ज़माने में हम जब बात करते हैं, where there is a marriage arrangement, तो एक point होता है, the girl and groom should have a resonant political ideology. हम कहते हैं अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी है तो शायद वो मैरिज अरेंजमेंट हो नहीं पाता. एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ मीम्स. बट अगर आपकी फैमिली में बात करें, योर ग्रैंड पेरेंट्स जिनको आप बीबी जी और बुजी कहती थी, both them were from opposite ideology. And 1940 की बात है, their grandparents fought election against each other. Her grandmother was fighting from Congress, and I think party कहीं मैंने गलत बात I think I missed. They were fighting against each other. मेरे दादाजी जो थे वो कट्टर जनसंघी थे और दादी थी वो पक्की कांग्रेसी. And they had a wonderful marriage. They always discussed, they always exchanged thoughts and opinions. There was a healthy exchange all the time at the dining table, and there was never a clash. There was never a clash. This is I think, a message for India today. There is no need for clash. We can hold on to our ideologies, and we can appreciate the other person's point of view. इस तरह की बैकग्राउंड से जब मैं स्टोरीज सुनती हूँ, स्टोरीज हैं जो हमें नर्चर करती हैं, जो हमारी बैकग्राउंड बन जाती हैं, तो ये these are the things that impact you and make you into the human being that you're going to become. We read the book, realize, madam, you are not just an artist of canvas, but an artist of life. इस तरीके से आपने अपनी स्टोरी, अपने चाइल्ड को एक किताब के फॉर्म में रिफ्लेक्ट किया है. आई थिंक वो इतनी खूबसूरत तरीके से, आई कैन सी लिटिल दीप्ति में बॉली कहूँगी, शी इज रनिंग एंड शी स्पीकिंग इन पोतली भाषा में. आई थिंक वो जो कॉन्वर्सेशन आपकी और आपके सिस्टर में है, इट इज सो लाइवली. While I was reading through the book, I can see थोड़ा सा you share a very special bond with your sister. और एक छोटी सी इंसिडेंस है, जब मैं बुक रीड कर रही थी तो मुझे पता चला she was taming you a lot of times. वो जो कहती थी वो आप वो करती थी, and you're a toy for the relatives around. And you said that that was your first acting workshop. Yeah, she would say my sister was just 2 years older than me. पढ़ने के लिए ऊपर के कमरे में लोगों को भेज दिया जाता, we had to study there. जब वो बोर हो जाती थी, student step. I was the dreamer, कभी मतलब drawing books and other things, and you know. वो जब हम छोटे, she would tell me when she would get fed up of a lesson, she would say, "Deepi, okay, come on now. Chuchi bana." Chuchi bana means become stupid, become like a moron, you know. And I would start stuttering, I would तुतलाना शुरू करती थी, तो मैं उसको entertain करने के लिए कुछ न कुछ बोलती रहती, तोतली ज़बान में. That was चूची बना. And when she would had her laugh, then she would say, "अच्छा ठीक हो जा," and I'd be completely normal, go back to my book, and she would go back to her. So I said in the book, I did say that I think because मैं trained actress नहीं हूँ, मैंने कहीं schooling institute में acting नहीं सीखी कभी भी, तो मेरा ख्याल ऐसा है, वो जो चूची बन जा ठीक हो जा days
थे ना, वो मेरे अर्लीस्ट वर्कशॉप्स इन एक्टिंग थे. Well, the picture of Deepti Naval that comes to everybody's mind, a sophisticated, a cultured phenomena. And while a lot of people were growing up, उन्होंने जो सबसे पहले the concept of simple love, integrity, वो शायद मैम आपके reflection में देखा है. But audience, can you believe she ran away from home at the age of 13 to Kashmir? उस ज़माने में जिस फिल्म को देखो उसमें कश्मीर में शूटिंग होती. वो डल लेक और चिनार के पेड़ और दो वादियाँ और पहलगाम और गुलमर्ग हर फिल्म में होता था. So when I was 13, I thought ये अमृतसर is not the place to be in at all. ये क्या जगह है, ये क्या है शहर है और बिल्कुल बकवास. I want to be in a pretty environment. I wanted to be in the valley of Kashmir, and I was exactly 13 when I ran away from home. Of course, मुझे पठानकोट तक भी पहुंची और मुझे वहीं से पकड़ के वापस ले आया. And I couldn't make it. I did make it to Kashmir, and thank God for that. I mean, the story goes on a little on the other side also. What my parents must have gone through that night. But ये इस तरह का टूर जो था वो नेचर के लिए था. मुझे बचपन से I was a nature lover. I was a dreamer. So you can say all the wrong adjectives लगा दो, तो you'd be able to understand a little bit कि वो as a teenager क्या मैं मतलब क्या रहा रहन. मैडम, जब 13 साल की उम्र में अपने एडल्ट्स को आप जब इस बुक के तौर पे, इस बुक के फॉर्म में जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आई थिंक जब आप रीडर्स आप इसको पढ़ेंगे यू कैन फील. और जब आप कहती हैं ड्रीमर, यू कैन ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग योर लाइफ. एंड शायद उसी का बाई प्रोडक्ट है कि वी कैन सी दिस रिफ्लेक्शन इन वेरी ब्यूटिफुल फॉर्म. यू बीन ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्टोरी दैट विल राइट समडे, एंड दिस बीन सो ब्यूटिफुली डॉक्यूमेंटेड. Yeah, definitely one thing I can tell you, when I left, I think ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं if I'd continued to live in Amritsar, never moved out, this book would not have been the same book. But because I had the chance of going away to America, looking back at my life and seeing the exotica there, seeing the beauty of that chaos, the beauty of those private moments of child, कि अपनी इमेजिनेशन होते हैं हर बच्चे की जहन में एक वर्ल्ड होती है, उसकी अपनी होती है, वो इमेजिन भी होती है, कुछ हेलुसिनेटरी होती है. But when I looked back at things, I felt, oh my God, there is so much that I would like about my childhood in Amritsar that I would like to share with the readers, because there was a lot there जो कि वहाँ रहते हुए नहीं समझ में आता था. बट थोड़ा डिस्टेंस जब क्रिएट हो गया तो in reflection I felt it was tremendous time that I lived through. उसमें बहुत कुछ है, उसमें the history and the political scenario of my hometown, उसमें कई कुछ है, wars हैं, जलियांवाला बाग है, बॉर्डर है, पाकिस्तान 65 की लड़ाई है, लद्दाख 62, चाइना वॉर है, कई कुछ है. So ये सारी चीज़ें that I got a bird's eye view, perspective changed when I moved out. I think that's why the book kind of resonates. And also the narrative of disposition from Amritsar to New York and then back to Bombay. Do you think it has changed your perspective in the choice of films that you've made? Because you've made a parallel cinema movement. Yeah. I don't know if it has anything to do with Amritsar or moving, but definitely when I was in Amritsar, when I was growing up, I was there till 18 years of my life. I spent there, kind of cinema we were exposed to, the kind of film we saw. इस तरह की romantic फिल्में, और Pran was villain and Jimmy Kapoor and everybody was always going to Kashmir. तो वो तरह चीज़ें simple सी फिल्म्स होती थी और अच्छी wholesome होती थी. उसके बाद जब मैं अमेरिका में गई और मैंने अपनी पढ़ाई कॉलेज शुरू किया, तो डेफिनेटली जब वर्ल्ड सिनेमा सामने आता है तो आपका नज़रिया बदलता है. आप आई वॉज नॉट एबल टू लुक एट एक्टिंग भी किस तरह से होगी और किस तरह से होनी चाहिए और हो सकती है. उस आइडियाज ऑल्सो चेंज माई व्यूज ऑफ
what good cinema, good acting, bad acting. ये सारी चीज़ें जो वो चेंज हुई बिकॉज अमेरिका जाके जब काफ़ी सारी और फिल्में देखी तो ये चेंजेस आए. मैडम, यू बीन ऑलवेज सिनेमा enthusiastic, अगर इस तरीके से बोल सकें. दो तीन इंस्टेंसेस बुक में मैम ने मेंशन किया है. एक, जब यू वॉच्ड अ फिल्म एंड डिडंट लाइक बिकॉज उसमें बहुत सारी मारपीट थी एंड नेक्स्ट टाइम यू डिडंट गो टू वॉच, बट जब वहाँ आपके कजिन्स लौट आए तो यू रिग्रेटेड. वो इंस्टेंस शायद मैं बहुत अच्छे से बयान नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैडम अगर आपके मुंह से सुन गए आई थिंक तो शायद ज़्यादा मज़ा आए. फर्स्ट फिल्म आई विल रिक्वेस्ट द ऑडियंस बैक इफ यू कैन आई एश्योर यू ये सेशन हम जल्दी ख़त्म कर देंगे. जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स. ओके, ये जो मेरी पहली फिल्म थी मेरी लाइफ की, इट वॉज कॉल्ड दुर्गेश नंदिनी. इट वॉज रिलीज्ड इन 1956. आई वॉज 4 years old. तो गए और मुझे तो इतना उसका फिल्म में इतना क्या हुआ वो सब याद नहीं. मुझे इतना याद है एक 2-3 सीन्स थे जिसमें तलवारबाजी जो है, एंड आई वाज पेट्रिफाइड एंड आई वाज हॉरिफाइड. कैसे लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, टू हर्ट ईच अदर, हर्टिंग. So I was like so scandalized that when I came out of the film, I decided this is first and last. Never going to see another film in my life. I will never go to a movie theater. I will never see anything like this ever again. उसके बाद अगला सीज़न हमारे बहुत से कज़न्स दिल्ली से आते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो वो सब लोग बहुत एक्साइटेड पिक्चर देखने जा रहे हैं. आई वाज टेलिंग माई सेल्फ, लिटिल डू दे नो, आने दो पिक्चरों में क्या होता है इनको पता चलेगा. तो जब वो लोग मैं किसी बहाना करके मैंने कहा मामा को मेरी बहुत पेट दुख रहा है, वो मामा सेंड मी बैक होम. तो मैं घर वापस आ गई एक्टिंग करके, अपनी पहली शायद एक्टिंग फर्स्ट परफॉर्मेंस. तो वापस आ गई. तो जब ये सारे कज़न्स घर लौटे वो तो उछल कूद रहे हैं, गाने गा रहे हैं, छलांगे दौड़ंगे, यू नो. तो आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड टू देम. दे सेड they saw a Shani Kapoor film. And it was full of songs and dances and music, and I told myself, I said, oh, if this is what it is going to be, I will never ever in my life miss another film, and I will never ever do acting. वो जो पेट दर्द की जो एक्टिंग की थी वो उस तरह की मैं कभी नहीं. तो इस तरह की चीज़ें जो बिगिनिंग का मेरा जो जर्नी सिनेमा के साथ रहा वो इस तरह की उबड़ खाबड़ चीज़ों से रहा. Madam made a promise that she would never miss a film. You missed classes. You bunked classes to watch movies. हाँ, वो सब बाद में. When you are when you finish school से तो भागना possible ही नहीं होता. तो जब 11th was our college, when we were in prep, which is the 11th standard, but we were trying to get out of school क्योंकि 11th में जाते ही हम लोग क्लास में थोड़ी बैठेंगे, हम तो सिनेमा हॉल में बैठेंगे. तो इस तरह का वो शुरू हुआ दौर जब भाग के सब फिल्में देखी. मैडम, बहुत ही खूबसूरती से आपने एक जगह डिस्क्राइब किया कि आई वुड सी ऑन दी पर्दे पे आप खुद को इमेजिन करती थी, स्टार्ट ड्रीमिंग ऑफ एन एक्ट्रेस. व्हाट मेड यू एक्चुअली यू बीन ऑलवेज अ सिनेमा एंथुसियास्ट, बट व्हाट वाज ट्रिगर पॉइंट कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? आई यूज्ड टू बी अ बिग मीना कुमारी फैन बचपन से, क्योंकि आई थिंक माँ को बहुत पसंद थी मीना कुमारी, और हम काफ़ी सारी मीना कुमारी राजेंद्र कुमार जी की फिल्में हमारे हिस्से में आती थी काफ़ी. तो मुझे बहुत पसंद थी मीना कुमारी, और मुझे लगता है कि शी इज़ द अल्टीमेट वुमन. आई वाज अ बिग admirer of my own mother because she was so beautiful looking. और my mother was a painter. ये किताब पीछे जो पेंटिंग है घर की छत है और मस्जिद है जो साथ साथ लगी हुई हैं, और इस छत पे मैंने 18-19 years of my life slept on this terrace every night. So my mother was a wonderful painter. She was beautiful to look at and wonderful soul, of course. लेकिन मेरी स्क्रीन आइडल सबसे पहली वो मीना कुमारी थी. जब मैं देखती थी, I was maybe 8 years old at that time, मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं वहाँ पे होंगी बड़े पर्दे पर, एंड जो ऑडियंस है मेरे साथ बैठे हैं लोग जो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, स्टार्स एक्टर्स के साथ वो दुखी होते हैं, तो एक दिन ये लोग मेरे साथ हंसेंगे रोएंगे. मैं दुखी होंगी तो ये भी दुखी होंगे, हंसूंगी तो ये हंसेंगे. तो इस तरह का हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होगा, मेरा एक इमोशनल कनेक्ट होगा विद द ऑडियंस. तो ये मेरा ड्रीम था. मुझे तब नहीं पता कि फिल्मों में आप जाने से आप फेमस हो गए, आप ग्लैमर, कोई यू अर्न लोड मनी, ऐसा कोई आइडिया नहीं था.
मुझे लगा था कि connect होगा, connect with the audience. So I want to be up there and everybody will be able to relate with me. This was my dream. So you begin the book by saying that stories is something that reflects and you want to be. Stories, I don't nurture them, they nurture me. अभी आप मस्जिद का मेंशन किया है, मैं इसी पे आऊँगी. There was a beautiful हवेली, पास में there was a मस्जिद जिसे कहते थे. It was a dirt, it was some time वहाँ अज़ान नहीं होती थी and suddenly one day the अज़ान started. Yes. It was a conversation between you and your sister. और मैं चाहती हूँ ऑडियंस को पता चले what is the essence of the book and how beautifully reflected. There were playful dialogues between you and your sister about the movie. Can we have that read from the book? I think this is a very beautiful reflection. And when you want to see how you were in childhood, you just have to read. And you read it, it's the entire picture that's glowing. मैं थोड़ा पहले से पढ़ती हूँ ताकि उसका ये मिले. In 1952, the year I was born, the Masjid was a dark, deserted place since most Muslims in Amritsar had left for Pakistan during partition. No one lived there except for the pigeons that fluttered around the blackened dome. And then in 1956, when I was around 4 years old, the first Maulvi returned to the Masjid. My memory of that October day is vivid. The court was beginning to set in. We hadn't yet moved downstairs. In the wee hours of the morning, while it was still dark, I suddenly heard a wail. Allahu Akbar. It filled the sky with startled pigeons. Azan, Azan, my father murmured as he got up from his bed and looked over the edge, peering at the masjid. In the dark, he could faintly discern a lone Maulvi standing in the center of the compound, his voice raised in prayer, breaking the silence of the deserted sanctuary. A sudden wind surfed the terraces. Pigeons winged their way up, making primordial circles in the sky. Didi and I woke up, went and stood next to our father. Mama came up the stairs and gazed at the scene below. The autumn wind wafted, stirring dry leaves around the mossy pond of the sea. A window slowly opened in Rajanti's house. Mochi Bhagwandas ambled into the gully, looking startled. A few more windows opened down the street, framing sleepy faces. People slowly woke up to the muezzin's call that rang out faintly in the dark. Shani's buffaloes were the only ones that remained unmoved. Azan, whispered Mama. Hi, how beautiful. That night, before going to sleep, my father, for the first time ever, spoke about the masjid as he remembered it from his boyhood days. I'm afraid काफी बातचीत आप लोगों की करने की. This is a book read. That night, before going to sleep, my father, for the first time ever, spoke about the masjid as he remembered it from his boyhood days. Let's the shorten audience. the session. आप लोग कर लें अपना काम. ठीक है. इसको खत्म करते हैं यहीं. Audience, please, it's a matter of pride. I'm done. I think you've got a faint idea about the book, and I'm happy being here still despite all this, but not used to these not literary sessions. Audience, please, I would request if you maintain silence. Madam is here for you. I am sure you all are here to listen, madam. It's a humble request. गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ. आप सभी से कबद्ध प्रार्थना है. पीछे जो बच्चे बैठे हैं, यह एक सीरियस सेशन है, एक किताब चर्चा है, और कितने सारे लोग होंगे जो जिंदगी में दीप्ति नौज को कभी देख नहीं होंगे, पहली बार देखेंगे और आगे देख नहीं पाएंगे. कृपया हम सबकी प्रतिष्ठा बचाएं और इस सीरियस सेशन को सीरियसली सुनें. आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है.
कुछ और हल्की फुल्की बातें करते हैं, किताब नहीं देते हैं फिलहाल, कोई और बताएं, सुनाएं. Let me hear you all because there's lots to be spoken in that. बोलिएगा कुछ. I was reading from the book, provided I'm allowed to read. There's so much going on. And I'm sure that it's not my job to keep audience, give a certain ambience. It's the job of the organizers. मैं 3 बार बोल चुकी, मैंने 4थी बार किताब बंदी है. उससे पहले 3 बार मैंने कहा है कि आप कर लीजिए अपनी बातें, हम रुक जाते हैं. Literally events एक sanctity होती है. चलिए कर लेते हैं और बातचीत थोड़ी सी. पर आप देखिए, आई थिंक मैडम जो कॉन्वर्सेशन है, जब आप उस कॉन्वर्सेशन बुक में से पढ़ेंगे, यू कुड एक्चुअली फील दिस इज अ कॉन्वर्सेशन हैपेंस आवर हाउस होल्ड्स, और हम शायद बात नहीं करते, वी शाई अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट. let me. Once the masjid reopened, the notes of the azan went up in the air 5 times a day. The muezzin summoned the people for namaz. There were no Muslims left in the area to come and pray. I listened intently to the notes of the azan. They were different from the sur Masterji had been teaching us in the music class, and almost sounded out of sur to my newly attuned ears. But there was something compelling about the notes. It was as if someone from far out the wilderness was calling you back home. The off-key notes slowly became part of our lives. I'd even begun to find them musical. Over time, I began to see a few worshippers in the masjid, men in long shirts and salwars wearing tiny white caps. I'd perch up on the sajja, the edge of the terrace, for a top-angle view of the masjid, my nose pressed to the concrete. The kids were forever curious about the Maulvis who'd hoist up their salwars and wash their gore feet in the pond before they started to pray. They come, look, they're coming out now, they're washing their feet in the pond. See? Such white feet. How fair they are and how fat. What are you girls staring at? Mama would ask, each time she caught sight of us hanging over the chajja. Mama, their skins are so pink, they look like Kashmiris. Okay, now get down, it's improper. They are Maulvis, pious people, stop spying on them. My sister and I would constantly look for excuses, go inside the masjid and look around. We would sometimes throw a ball at the dome and then go running all the way around to the Hall Bazaar entrance to ask for the ball. It seemed like a perfectly valid excuse to enter the mosque, but we never succeeded. All we wanted was to go inside once, just once, inside our masjid as we considered it. We could understand why we weren't ever allowed to step inside, but no, girls weren't allowed. We told firmly. How unfair was that? When I think back as a child, the magic of the masjid continued to have a grip on me, and I felt a great longing to go inside the holy shrine and explore its forbidden spaces. Once on our return from a holiday, I entered the house, sprinted across the Veda, ran straight up to the terrace, and for once stood stunned. A spotless white dome stood dazzling before me against the blue September sky. Wide-eyed, I gaped. The masjid was no longer dark and weather-streaked. It had been painted white, whiter than anything white I'd ever seen. I was enchanted. Thank you. Thanks. Ma'am, story singing has been so beautiful, everything so picture perfect. But I reached to a point that shocked me. It was your parents' section.
has impacted you while growing up? No, that happened when they were in the 70s. But you have a lot of instances of them. Yeah, I recall the few that I was impacted, and I could hear an acrimonious argument or an interaction which unnerved me. So I wrote about that. Yeah. I wrote about whatever. The book is honest to the point of everything that happened and I was aware of in my childhood. If I knew reasons why they were arguing, what they were arguing about, that was later, that came later. So it's not in this book. In this book is what impacted me as a child, how I received it, how I maybe became insecure, vulnerable, or stronger, or disillusioned, or whatever the impact of each thing was. But वो उस सच्चाई से जुड़ा हुआ है जो मेरी सच्चाई थी as a child. My parents did separate in their later age, but that's not part of the book. Ma'am, you have also mentioned about the instances from 1962 Indo-China War या फिर Indo-Pakistan War in 1965. You were fascinated by the war and the settings और किस तरीके से वहाँ पे रेडियो पे पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद लाहौर रेडियो पे आप ट्यून करते थे. जब आप न्यूयॉर्क 1960 you met a friend. I'm forgetting her name. Neenu Munawar. She was from Lahore. Yes. Yeah. इस war के बारे में मैं बता रही हूँ कि 1962 की war जो थी चाइना वॉर वो लद्दाख में लड़ी गई और उसके बाद हमें पता था कि लड़ाई हुई है पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर in the north, somewhere which was far. According for us, I'm a North Indian, Ladakh was very far. तो उतना ऐसा था कि कहीं पहाड़ों में है. और उस वॉर की रियलिटी हमें पता चली एक फिल्म जब हम देखी 2 साल के बाद. एक फिल्म आई हकीकत. उस फिल्म से हमें पता चला कि लद्दाख क्या लैंडस्केप है, किस तरह के पहाड़ हैं वहाँ, डेजर्ट है, माउंटेन है, क्या है, और वहाँ ये लड़ाई लड़ी गई और कैसे हुआ. और गाने तो बहुत मशहूर हुए उसके. मैं ये सोचकर उसके दर से उठा वो रोक लेगी मना लेगी मुझको. Those classic songs, from that period. लेकिन जो 65 3 साल के बाद लड़ाई छिड़ गई खेमकरण बॉर्डर पे, तो लाहौर एंड अमृतसर इज 52 kilometers away from each other. So that was like, and Khemkaran was even closer. So that reality, the reality of the 65 war was very much, it really charged. I remember the atmosphere was so charged क्योंकि शहर में से हॉल बाज़ार में से पैटर्न टैंक्स की पूरी कतारें जो हैं वो निकल के जा रही हैं बॉर्डर की तरफ और हम देखते थे. और the women were busy preparing food for the Fauji's. ट्रक को रोक के हमारी mothers, aunts, everybody would go and take food for the Fauji's. The young girls, they would go to the hospital जहाँ ज़ख्मी जो हैं soldiers आते थे उनके घर पे चिट्ठियाँ लिखनी. तो young girls और हम स्कूल के जो बच्चे थे बेसिकली हमें कोई ख़ास काम नहीं दिया गया था एक्सेप्ट कि जब बैकआउट होता है तो आपको खिड़कियों के ऊपर काला कागज़ लगाना है. तो वो जाके ड्राइंग पेपर लेके आओ और उसको वो चिपका, और जब सायरन बजे तो ट्रेंचेस में भाग के ट्रेंचेस में छुपो. बट वी नेवर रियली फॉलोड दैट. कागज़ वागज़ तो लगा दिए लेकिन जब सायरन बजता था और सबरे जेट्स ऊपर घूमने लगते थे दे वुड बी वरिंग ओवरहेड, तो हम लोग नीचे ट्रेंचेस में भागने के बजाय हम लोग छत पे भागते थे देखने के लिए कि वो ये क्या हो गया. सो वेरी एक्साइटेड. So I've written about all that, my experience of the war as it was. But my father, जितने दिन भी वो war चली, 2 हफ्ते चली शायद, 20 दिन चली, my father saw that this is not what, he said, I want to take the girls to the border. इन्होंने कर लिया अभी अपना enjoy कर लिया जो भी इनका था बच्चों का, but I need the children to understand what war really is. And he took us to the Khemkaran border. After ceasefire, जब declare हुआ ceasefire, उसके अगले दिन he took us to the Khemkaran border, and that's when I saw images that एकदम मतलब I felt at that time that from a child I've become a grown-up person. I'm a grown-up human being now.
I can't be a child anymore. ये सब देखे, you can never be a child anymore. You know? So that experience of the war, when I, after that, few years down the line, when I went to America, and I'm sitting with my Pakistani friend, she's from Lahore, I'm from Amritsar, and we're recalling the same war. We have the same memories, just that I'm on this side of the barbed wire and she's on the other side. But वही images, वही memories, जैसे उनका भी बचपन में वो क्या करते थे, हम क्या करते थे, it was exactly the same. It was so ironical that we shared the same memories, and then we would sit across in Manhattan, में बैठ के coffee shop में बैठ के हम लोग बात करते थे कि why war? Why, when life was so beautiful? Thank you. मैडम, पार्टीशन के बारे में भी आपने काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है किताब में. डू यू थिंक दैट इट हैज़ शेप्ड योर आउटलुक पार्टीशन, बिकॉज अमृतसर वाज जस्ट द बॉर्डरिंग सिटी? या पार्टीशन, माय फादर यूज्ड टू से, पिताजी कहते थे कि कोई पंजाब में कोई नो स्टोरी इज कंप्लीट, नो फैमिली is there in Punjab which doesn't have a story of partition behind it. और सही भी था, because there was, my mother came, my parents were in Lahore, my father was studying at the DAV college, he was studying English literature, my mother was studying painting at the BC Sanyal art school. तो वो father पहले आ गए थे थोड़े साल पहले, और ममा की फैमिली थी. My mother was from Burma, पंजाबी फैमिली, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बर्मा. पहले तो वहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 42 में, पूरी फैमिली वहाँ से एक्सोडस ऑफ इंडियंस, एंड ऑल द इंडियंस एस्केप्ड, दे हैड टू वॉक अक्रॉस द असम हिल्स एंड कम टू इंडिया. सो पहला एक्सोडस बर्मा टू इंडिया हुआ हमारी फैमिली में, और सेकेंड हुआ जब आगे सेटल के थे लाहौर में, सेटल हो गए कि अच्छा अब जीवन यहाँ होगा, अब ये लाइफ विल बी हियर, तो पार्टीशन होगा. एंड देन दे हैड टू रन अवे एंड दे हैड टू सेव लाइफ, एंड यू नो कैसे भागे हैं वहाँ से. फ्यू नाइट्स अगेन द सेम थिंग, कर्फ्यू, और द मैसेकर हैड स्टार्टेड इन लाहौर, और ऐसे वहाँ निकल के आए. और वो स्टोरीज जो है वो मेरे बचपन में मैंने बर्मा की स्टोरी सुनी, बिकॉज आई बिलोंग टू आर्य समाज फैमिली, तो कोई मर जाना वो नॉट पार्ट ऑफ माई ब्रिंगिंग. एक माते प्रभु है बस है, तो ज़्यादा कुछ उसमें ताम झाम ही नहीं, रिचुअल बस हन होता था, दैट इज़ अबाउट इट, और कि प्रभु बस हैं. तो हमें मुझे कोई रामायण या महाभारत की स्टोरी सुनने मिली ही नहीं बचपन में. मेरी जो माइथोलॉजी है वो मामा की स्टोरीज फ्रॉम बर्मा, वो मेरी माइथोलॉजी रही. तो मैं जो स्किल फॉर स्टोरी टेलिंग भी अपनी मदर से सीखा, उनको सुन के. So I have always felt that art storytelling comes to me from my mother, and there is this whole partition and displacement of a body of people's displacement has played such an important part in the history of my own family, that it has always weighed heavy. And then my father decides to migrate. By the time we finished school and I went 2 years in college, my father decides to migrate to America, and then again starting life all over again. Then I leave America and I come back to Bombay, and I have nobody. I don't know anything about show business. Again there's this whole शायद वो ability to start life all over again, an unknown place with nothing. शायद वो मेरे genetically शायद अंदर से आता है. So I'm kind of afraid to venture. शायद. Thank you. मैडम, जो माइग्रेशन अमेरिका टू इंडिया होगा, आई थिंक वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. Yes. बताना पड़ेगा लगता है. Everybody is waiting for it. Eagerly waiting. मैम, यू हैव बीन ऑलवेज अ ड्रीमर. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने आपकी जिंदगी में काफी इम्पैक्ट किया. You've written the novel Amritsar in the universe on the pillar of your heart. Space. Finally. Yeah, हम लोग, I think it was 1964, right? जब when first man landed on moon, से पहले तो हम लोग चांद को देख के बस इन फिल्मों के गाने ही चांद के रिलेट करते, सोते थे छत पे चांद को देख, ट्रांजिस्टर गाने
चलते रहते हैं. And it was our relation to the moon is through Hindi film songs, Chand Phir Nikla and so many of those songs. But then the first man lands on the moon, 1964, and Neil Armstrong. And the newspaper are saying, man's first step on the moon. And I remember going to sleep that night and I couldn't sleep because I was looking at the moon with new eyes. You know, it was completely a total change of equation. The moon, the fact that human being can go there, can reach the moon and step on the moon and land on the moon. I mean, it was something. तो उस बाद मैंने अपने घर के पिलर था, बरामदे में जो पिलर था, उस पर मैंने अपना एड्रेस ऐसे नीडल मामा की निटिंग नील से एंग्रेव कर लिखा दी थी. नवल कटरा शेर सिंह हौलदार अमृतसर इंडिया क्या यूनिवर्स एंड देन इट एंडेड विद स्पेस. कहीं कहीं आप एक तिपका सा एक हल्का सा कुछ है कण कोई यू नो इस ज़मीन पर. बट द perspective was from space लेके and then but opening from here and then going all the way out to space. So that kind of that my father reacted to that. America he told me, he says भाई मैंने आपका लिखा हुआ देखा था और मैंने उसी वक्त मन बना लिया था कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे. We will migrate. I must open up a wider horizon for my children to grow and to groom themselves and give them a wider horizon to पनपने के लिए. मैडम भी आपने कहा कि एक दिन का एक कण हूँ मैं. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी conquered the world and still there is lot left for you to conquer and we look forward to that. Thank you so much. Thank you. Still as young as evergreen. Madam, Let's, if anybody, yes, we can take questions from the audience as well. We can start the women power first. how many minutes do we have? ये session कितना? 10 minutes. So 10 minutes, let's have a chat with the audience. Read out something. Okay. Poem नहीं इसमें. You can. Yes. Can we have this read and then we take the question? Thank you. एक pages हैं फिर आप अगर because this is an image. This is my favorite image from my childhood. One of the favorites. There are many favorites. One Diwali night was particularly eventful. I would later remember it as the blue frog fiasco. I must have been around 7 years old then. In preparation for Diwali that year, Mama had cut out from Women Home a beautiful picture of two little girls, white girls wearing identical frocks. The frocks were rich, deep blue gathers at the waist. Dainty white lace frills hung off edges of the collars and sleeves. Mama wanted the exact same blue frock stitched for Didi and me for this Diwali. तो I describe कि कैसे वो मामा वो कपड़े के रंगवा के मैंने सब वो अपना अपने मैंने उनको सबको एक नाम दिया हुआ था. मेरे लिए सबका एक नाम था. They were not nobodies, just buffaloes. No, each one had a name. कोई ब्राउनी थी, कोई गंगो, कोई चार्ली, कोई भूरी, सब इस तरह से नाम थे. तो वो सामने जो बफलो शेड है वहाँ से इस तरह के जो नाम वाम तो कलरिंग के पास मामा लेके गई और उन्होंने कहा कि ये ब्लू और मैगजीन भी लेके गई साथ में कि ये पर्टिकुलर माय मदर बीइंग अ पेंट सेड नो दिस इज रशियन ब्लू एंड ही सेड हाँ जी बीबी हाँ जी एंड आई वांट द सेम ब्लू रशियन ब्लू. द डे ऑफ दिवाली आई वाज वेरी एक्साइटेड. और फिर सबने जो दर्जी था सरदार टेलर उसको दे दिया वो ब्लू रंग का कि आप स्टिच कर दो. एक में दिवाली 2 फ्रॉक्स बनेगी, एक दीप्ति और बॉडी एंड डॉली. The day of Diwali, I was very excited. Every now and then, I'd run to the thada to check if the frocks were ready. Day turned to evening, evening came to be night. But this Diwali night, the frocks did not get stitched in time, though the darzi stayed up till late, working on them, little blue strips scattered all around him. Both Dee and I waited. I walked up to the terrace and leaned over the edge, looking down at the Moji dwellings. How beautiful their homes appeared.
lit with oil lamps, and the sound of their nightly dholak more rigorous, singing more intense. The mud houses glowed, freshly coated walls, and the white powder motifs painted on the thresholds and around windows. The scene looked like it was out of a picture book. Yet, despite lamps, the rangoli, and the music, there was something sad about this Diwali night. On our terrace, we had not lit candles. As night wore on, the festivity around us began to fade. The firecrackers that had lit up the sky a while ago, creating a fantastic backdrop for the white minarets of the mosque, had dwindled to a handful of flashes here and there. Children around the neighborhood had finished bursting the last of their crackers for night and were now going back inside their homes. The old Sardar Darzi, sitting on a wooden stool, working away in his modest establishment, giving the finishing touches to a frock by hand. His was the last shop still open in the street. Both Didi and I were quiet. Mama stood at the thab with us, sharing our disappointment. All the iron wooden shutters of the shops on our street had clanged shut, a finale to Diwali night. We came back inside, time for us to change into our pajamas and get into bed. This Diwali night was gone forever from our lives, uncelebrated. Suddenly, there was a knock on the paddock. Without pausing to think, I ran to open the main gate. I perched on my toes to push up the iron latch so the small gate could be eased open. In my heart, I knew whoever was knocking on our door at this hour could only be God sent. Sure enough, there he was, the old Sardar Darzi, standing in the dark, his face frayed and tilted to one side, both his arms stretched out. My eyes lit up at what I saw. Our red-toned Messiah, his grey beard and white turban glowing in the light of the street lamp. The Savior himself. In his hands, he held two hangers on which hung frocks of the most brilliant blue I'd ever seen. The old tailor's face had a faint smile of regret and benediction at the same time. I looked at the frocks and then at him. He came from behind and stood next to me. There we were, two little girls, misty-eyed, gaping at the old man who stood Jesus-like, blue color dripping from his palms. Mama quickly changed us back from the pajamas into our new blue frocks. That Diwali night, we were the last girls lighting firecrackers, invoking the gods, illuminating dark skies. Thank you. Thank you. Can we take questions from the audience from this side first, and then we'll come back to you? Any questions? Can we give the mic to her, please? Yeah. हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते। और मैम आप किताब तो मैंने नहीं पढ़ी, उसके बारे में अभी मैंने मतलब देखा। मैं आप शानदार पेंटर भी हैं, आपकी पेंटिंग्स मैं देखती रहती हूँ। तो आपने बताया कि आपने कहीं एक्टिंग सीखी नहीं है, तो पेंटिंग भी कहीं सीखी है, मम्मी से इंस्पायर होकर बनी? नहीं, मामा से सबसे पहले सीखी, because when I was a child, she would put me on the dining table, make me sit and she would teach me how to sketch. और उसके बाद जब मैं टीनेज ईयर्स में आई तो मैंने अमृतसर में एक ठाकुर सिंह आर्ट गैलरी है, बहुत मशहूर पेंटर हैं जिन्होंने सोनी महिवाल की क्लासिक पेंटिंग बनी है, सोनी महिवाल जी ने बनाया, ठाकुर सिंह जी की गैलरी मैंने सीखी। एंड देन ऑफ कोर्स इन स्कूल, बिफोर दैट इन स्कूल देयर वाज सिस्टर गैब्रियल who taught me painting. All nuns school were from of Belgian congregation, so they were all European nuns that who brought me up. So मैं डॉक्टर कुछ सिंह, मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग की हेड हूँ लोधिया डिग्री कॉलेज से, तो मुझे बहुत वो थोड़ा लगा। थैंक यू मैम। Any question from side, madam? of course, when I went to New York, painting was my major subject. I graduated with painting as my major. जी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। आप तो कई को स्टार्स के साथ काम किए हैं और एक से बढ़िया एक मीनिंगफुल सिनेमा हम लोगों को दिए हैं, तो कुछ उन दिनों को याद करते हुए अपने को स्टार्स को खास तौर से याद करना है इस अवसर पर। मैं मतलब मुझे तो मेरे इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इनके साथ नहीं काम किया। जी जी। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा काम में फारूक शेख साहब के साथ किया, और क्योंकि 7-8 में हम लोगों ने साथ की, एंड वी वर्कड वेरी इजी to work with each other. We were very comfortable working with each other. But I'm very fascinated working with Nasiruddin Shah. I always wanted to do more films with Nasir. वो मेरे फेवरेट एक्टर भी रहे हैं, भी हैं शायद फेवरेट ही, और कई यंगस्टर्स आ रहे हैं जो मेरे फेवरेट बन चुके हैं, लेकिन नसीर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा काम करना। 2-3 फिल्में मेजर हम की, और कुछ ऐसे हम रोल्स किए जो फिल्मों में हम एक साथ सीन्स नहीं कर रहे थे, we were in the same films together, Nasir. And then I also enjoyed very much working with Rishi Kapoor.
मेरी फिल्म थी ये इश्क नहीं आसान, पता नहीं किसी देखी नहीं, लेकिन यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे अगर आप देखिए इश्क नहीं आसान, आई थॉट he first of all, Chintu, Rishi ji was a very fine actor. We were same age, we were both 52 born, and so we related to the same things, same songs, So, he was a very fine actor. He was very hardworking, and acting the way I saw him, how acting came to him so easy, तो मैंने फारूक और मैं काम करते तो हमें लगता नहीं था कि हम जा रहे हैं काम पे और हमने कुछ करना है, हम जाते हैं जस्ट अ गुड टाइम, की फिल्म हो या साथ साथ हो या किसी ना किना या रंग बिरंगी, मतलब यूज्ड टू हैव गुड टाइम, और हंसी मजाक में पूरा दिन हम लोग काम करके वापस आ जाते थे। इट नेवर वाज अ बिग डील। नसीर के थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता था सीन को। थैंक यू। मेरा ऐसा डायलॉग है नहीं कोई जो मैं ऐसे डायलॉग बाजी कर सकूं। हाँ, चमको तो सब जाते हैं, मैं एक से चमको सब पसंद है, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सभी को पसंद है, लेकिन भी कुछ और भी फेवरेट फिल्म है, प्लीज़ देखिए। अनकई, मैं जिंदा हूँ, ओके, ये इश्क नहीं आसान इज वन ऑफ देम, लिसा माया, मरीज इन मार्च, एंड लिया, वेयर आई प्ले दिस एनआरआई वुमन, है ना, व्हिच वन, जुनून में क्या, मैं एक 1.5 सीन है उसमें तो मेरा, कमला, मतलब मैं वो कथा, ऑफ कोर्स आई एम सिंग के फारूक की फिल्म के अलावा, फारूक की और मेरी फिल्म में तो सबने थी। एक बार फिर उसका प्रिंट नहीं है अवेलेबल, वो फिल्म हम भी ढूंढ रहे हैं उस फिल्म को, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। इट्स अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म, अ बिट ऑफ अ फेमिनिस्ट स्टेटमेंट भी थी वो, एक तरह की, उस जमाने इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग फिल्म। Madam has been waiting for a question from quite a time. Sure. मैं अपने एक इंटरव्यू में कह रही थी, जब बहुत कुछ कहने को होता तब कुछ भी नहीं कहने को होता, और ये आई कांट लेट पास दैट लाइन है, जब बहुत कुछ कहने को जी चाहता है ना, तब कुछ भी कहने को जी नहीं चाहता। क्या बात है मैम, आपने काफ़ी सारी फिल्में की, पंचवटी, कमला, ये सब फेमिनिज्म को अपील कर रही थी। उसके बाद आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपको झंडा गाड़ने वाला फेमिनिज्म नहीं पसंद आता। नहीं, मैं कह रही थी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट, आई एम जस्ट क्वाइटली इंटरनली अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो मेरा जो प्रश्न है मैम कि आप एक ऐसे फैमिली से हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत सशक्त रही, आपको किरण बेदी ने पढ़ाया भी है, तो फिल्मों में पढ़ाया नहीं है, शी वाज जस्ट 3 years सीनियर इन माय स्कूल, शी वाज सीनियर, और जिसको हम लोग अपने सीनियर्स को पूछते थे, मतलब ये वो जमाना था, सीनियर होते थे तो आप हो जाते थे, सीनियर आपके सामने से निकल रहे तो यू वर स्टैंड अटेंशन, जैसे कि सिस्टर या ना निकल के। तो ये सशक्त किरदारों का फिल्मों के चयन में क्या योगदान रहा है मैम? किसका? जो आपके घर में महिलाएं रही, बहुत सशक्त रही, तो इसका फिल्मों के चयन में क्या योगदान रहा? आई थिंक जब आप मेरी फिल्म देखेंगी, अगर आप मेरी फिल्मों की लिस्ट है वो देखें, तो आपको मेरी चॉइस ऑफ फिल्म से थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि इवन व्हेन आई प्ले अ रोल लाइक कमला, who is a doormat really, but the film, the statement film is making is a major statement. वो फिल्म जो कही कि देखिए आज भी औरतों को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, you can buy a woman for 260 rupees from interiors of मध्य प्रदेश और some such place India, मतलब ये फैक्ट है, वो कमला was a real story। हाँ, तो उसमें मुझे कमला प्ले करने में कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज फिल्म जो मैसेज दे रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जैसे कि एक फिल्म की मैंने, घर हो पैसा, उसमें एक लड़की आती है और वो उस घर में शादी करने से पहले उस घर को सही बराबर करती है आके, तो उस घर की पहली बहू जो है मैं प्ले करती हूँ, एंड शी इज़ माई फ्रेंड, एंड आई एम वन हु इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली इन दैट हाउस। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग, इंटरनली स्ट्रॉन्ग, तो आप इस तरह का रोल नहीं कर सकती, मैं प्ले कर सकती हूँ, लेकिन ये है द फिल्म जो मैसेज वो इट शुड बी फॉर द स्ट्रेंथ वुमेन, नॉट द वे अराउंड। पंचवटी मेरी बहुत फेवरेट फिल्म इसलिए है कि पंचवटी में आई प्ले दिस पेंटर, शी इज़ फ्रॉम नेपाल, शी डज थांग पेंटिंग, जो मॉनेस्ट्रीज में, टेम्पल्स में की जाती है, फ्रेस्को एंड ऑल दैट, तो दीवारों पे थांका पेंटिंग, और वो करती है, और उसकी शादी हो जाती है, एंड देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड हर, एंड देयर कम्स अ पॉइंट वेयर द रिलेशनशिप बिकम्स फिजिकली वायलेंट,
So that is the time. She's very quiet. She's not somebody. वो ऐसी औरत नहीं है, लड़की नहीं है, अपना अस्तित्व ढूंढ रही है. उसे मालूम है अपना अस्तित्व, पता है. ये फिल्म उसका अस्तित्व ढूंढने में टाइम नहीं लगाती. फिल्म के शुरू में ही she knows who she is. She marries with great faith कि मैं इस घर में मेरी शादी हुई जहाँ सेंसिबल लोग और अति सेंसिबिलिटी वाले लोग हैं. तो जब वो सही नहीं होता and when it becomes physically a self demeaning point पे जब आते बात, so she says okay, till this I have tried but no more. I'm now opting out of this marriage because it is going downhill only now from this point. So she backs off and then she gets into not a relationship but an encounter with a man who she really looks up to. And when she conceives from that man, she says, I'm not leaving one man to latch on the next. I'm going to live on my own terms. I'm going to live myself. If I have a child, I will give birth to my child. And I will look after, I will not look for कि अब किसा इसको पढ़ूं. Or, you know, that message I thought was, that I feel, as a woman, I feel closest to character in Pachwati. Her name is Sadhvi. And in her thinking, in her belief, in the way she carries herself, in her inner strength, I completely relate to her. I don't much relate to the sweet girl next door. आप लोग मेरे ऊपर थूकते रहते हैं ये. हाँ, मतलब मुझे कोई बात. मैडम मैं राजेश रेड्डी हूँ, बॉम्बे आया हूँ. मेरा मुशाह कल है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि मैं आज आपको सुन पाया, देख पाया. ज़बरदस्त दिन आपके रहे हम शुरू से. अभी आपने किसी ने पूछा कि कोई डायलॉग सुनाई है, मैं उसी सिलसिले में अपना कमेंट करूँगा. उसके बाद आप चाहे तो कुछ बोलें कि दीप्ति नवर मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म की पहली आम लड़की हैं. हिंदी फिल्मों की पहली आम लड़की हैं जो डायलॉग बाजी और क्योंकि फिल्मों में लड़कियां तो होती हैं, बोले वो फिल्मी लड़कियां होती हैं, वो फिल्मी लड़कियां होती. आप पहली हीरोइन रही हैं कि लगातार फिल्में ऐसी आई हैं कि वो आम लड़की, इंसान की आम लड़की को कहीं भी जाए और जिसे आप कहीं रिलेट कर सकें. तो मैं इसलिए आपको शुक्रिया करूँगा और लोगों को बताऊँगा कि आप इस वक्त हिंदुस्तान की पहली लड़की सामने हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. My only thing is कि ये जो हम लड़की कहते हैं, इसको आपको रीडिफाइन तो ज़रूर करना पड़ेगा. रीडिफाइन तो करना ही पड़ेगा. जी. कम नहीं आ नहीं आप बोलिए, तो ऊंचा बोलिए. हेलो हेलो, हाँ आ रही है. तो मैंने आप पोएम्स भी पढ़ी हैं, बहुत ही खूबसूरत आप लिखती हैं, इतनी खूबसूरत अदाकारी भी करती हैं और पेंटिंग भी बनाती हैं. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सी किताबें हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करती हैं? कौन सी किताबें, बुक्स, किताबें? आपकी फेवरेट जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब? किताबें तो काफ़ी सारी हैं. आई थिंक कुछ राइटर्स, कोई मतलब ऐसे मुझे सबसे पहले याद है माय मदर. आई वुड सी हर सिटिंग मुंबई पे बैठ के विंटर्स में धूप में बैठ जाती थी और वो उनकी बार बार वो किताब वापस निकालती थी लाइब्रेरी से और पढ़ती थी. हेमिंग्वेज ओल्ड मैन एंड द सी. हाँ, तो वो भी मुझे शुरू की रीडिंग में ओल्ड मैन एंड द सी तो है ही है. देन रेड सो मेनी पोएट्स ऑल्सो, नेरूदा एंड सो मेनी. आई among contemporary literature, I would say Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez. I am a big fan of Salman Rushdie. I love Arundhati Roy. मतलब हमारे यहाँ जो लोग हैं पहले उनसे ही स्टार्ट करते हैं. Then of course आजकल मैं मुराकामी से पहले नौकरी, तो मुराकामी की किताबें मुझे बहुत पसंद है because I like his style of writing. I'm discovering नए राइटर्स में. So इस तरह से कई कुछ है. ऐसे कोई एक या दो फेवरेट नहीं कहा नहीं जा सकता. Madam, what a wonderful session has been. Thank you. जी. हाँ हाँ. बोलिए. इस वक्त सिनेमा और टेलीविजन की दो सबसे इमोशनल फेस की पर्सनालिटी मौजूद हैं. दीप नवल जी सिनेमा और अनिरुद्ध जी टेलीविजन के. मैं एक अलग तरह की सिमिलरिटी देखता हूँ फेस से. थोड़ी पहले हमारे सेशन था कि साहित्य और नॉस्टैल्जिया. हम वहाँ से सफ़र पूरा करते हुए इस वक्त पहुँचे हैं और मेरा ख्याल है कि सिनेमा की एक पर्सनैलिटी यहाँ बैठी हुई है. हम चाहते हैं कि जैसे प्रेजेंट पे हम आ जाए. आप शोर जो हॉल में हो रहा था, आप विचलित हो गई.
सिनेमा क्रिएटिविटी का माध्यम है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो फिल्मों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक खास तरह का शोर उठा हुआ है, हर कुछ दिनों बाद इस शोर फिल्मों के अगेंस्ट जो है, जो सेंसर के साथ जो हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एज पता नहीं क्या कहना चाहिए, मैं अपने आप को इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही समझती हूँ, लेकिन आजकल कुछ दोबारा से कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं, इनसाइडर आउटसाइडर, ये वो सब तरह की, तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में मुझे पता नहीं है। बट बीइंग अ पर्सन फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, आई कैन से कि इंडस्ट्री को जैसे कि एक टारगेट किया जाता है, चलता है, कब तक ये रहेगा, बट पीपल जो एक मैजिक और इतना एडुलेशन हम लोगों के मन में होता था फिल्मों के लिए और फिल्म के लोगों के लिए, वो सब आज के लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कहा जाता है और इसको थोड़ा सा टारगेट किया जाता है, किया जा रहा है। तो थोड़ी देर पे तक तो ये था, मैं देख रही थी, अब पता नहीं थोड़ा सा संभला है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बहुत मुश्किल लाइन है, बहुत मुश्किल ये प्रोफेशन है, इसमें बहुत जान लगनी पड़ी है। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। आप रात को 2:30 बजे सीन शूट कर रहे हैं, आपको नींद के मारे बुरे हाल है, यू टू जस्ट पुट योर हेड समवेयर एंड गेट सम स्लीप एंड यू हैव टू लुक ब्राइट एंड चर्पी एंड यू टू डू सारा ये सब कर, आई मीन यू नो इट्स यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अगर इतने फालतू के लोग इंडस्ट्री में मेहनत वाली इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, या आप कह लो कि मेहनत वाली छोटी फिल्में, बड़ी फिल्में, मीडियम फिल्में कैसे बनती? पीपल हैव गिवन देयर लाइव्स टू सिनेमा और पीपल टेक बिग रिस्क्स विद, लोगों के घर बिक गए हैं सिनेमा के लिए, लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने पैसे लगाए, फाइनेंसेस क्या क्या, आई मीन इट्स एक यू हैव टू डिवोट योर लाइफ टू दिस प्रोफेशन, तभी आप इसमें कोई अपना नाम कमा सकते हैं। इट्स नॉट ईजी। सो इस आसानी से फिल्म वालों को आजकल बुरा भला कहा जा रहा है, तो मैं समझती हूँ बहुत ही गलत है। आपका कोई प्रश्न है? जी। अभी आप सबने दीप्ति मैम की किताब का बुक रीडिंग सुना है। मैं आयोजन समिति की तरफ से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, कल दीप्ति मैम रहेंगी, राजेश रेड्डी जो यहाँ बैठे हैं, उनके साथ अगर मौका लेगा हो तो आप लोग नज़्में भी सुन पाए। कल जो सम्मेलन है उसमें आप एक दो नज्म सुनने की लोग इस हॉल को उम्मीद देना चाहते हैं। मेरी तो कल फ्लाइट है, सुबह 10:20 की बोर्डिंग है। परसों है ना? कल है, कल है 8 तारीख। 9 को अपने पहले 9 थी, चेंज हो गई मैम, 9 है। कल है 8 है। आई वुड हैव लव टू स्टे बैक साल जी, क्योंकि मुझे कल की है, परसों की है? कल की क्या क्या सुनाना है फिर से क्लियरली? मैंने वो नज्म सुनानी है, कोई नज्म, कोई भी ये एक अच्छा एक थोड़ा मतलब मैं नॉर्मल में मैं आपका मन थोड़ा सा बदल देता हूँ। राजेश रेड्डी बैठे हैं, इनका एक मशहूर शेर है, मेरे दिल के किसी कोने में बैठा एक मासूम, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की दिख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ठीक उलट आपकी ये किताब है। तो my book is a celebration of childhood, and I'm sure many people here will be able to relate to that celebratory part of childhood, because that time never comes back and it's unmatchable. तो मैं ट्राई करती हूँ एक नज़र। छोटी सी, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैदल चलें, कुछ ना कहें, अपनी अपनी तन्हाइयाँ लिए सवालों के दायरों से निकलकर रिवाजों की सरहदों के परे हम यूं तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, तुम अपने माजी का कोई जिक्र न छेड़ो, मैं भूली हुई कोई नज़्म न दोहराऊं,
तुम कौन हो, मैं क्या हूँ, इन सब बातों को बस रहने दें, कुछ ना कहें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पे पैर चलें। Thank you. What a wonderful session has been. Thank you so much for gracing this session. Thank you. I Thank you, think, all of you. Thank you. thank you. I think Madam is getting. Question? Wait. What? Please, mic, please. Please. नहीं नहीं, अभी छोड़िए। I think- कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? We please give him a नहीं, mic. ठीक He है। wants to ask. Thank you. Thank you so much. इतनी अच्छी नज्म के बाद प्रण का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जिद कर Yeah, definitely. जितने लोगों को ऑटोग्राफ लेना है दे अब बुक पर, वो लोग अभी ले लें, ये साइनिंग सेशन अभी कम हो जाए। जिनके पास किताबें हैं और ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं वो अभी ले लें।